Welcome to Educare. Our next topic is employment income. So we need to distinguish between employment and self-employment. So it has been held that employment is a contract of service, whereas self-employment is a contract for services. And a factor which might lead to the presumption of employment rather than self-employment, वो आपके पास वो फैक्टर कि जिनकी मदद से आप डिसाइड करते हैं कि दिस इज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्विपमेंट. If the client provide equipment for the work performance, then it is said to be employment. अगर आपको एक दूसरी पार्टी, एक दूसरा पर्सन जो है वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप उस पर काम करें, तो then it is said to be employment. Basis of payment. Once ये कि individual is committed to work for a certain number of hours for another person and he is paid by hour or per week or per month, then it is said to be employment. Financial risk. If the individual bear individual risk in the work performed, then it is said to be the indication of self-employment. अगर आपने जो भी काम परफॉर्म किया है उसके हवाले से आपको रिस्क होगा कि पता नहीं पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, then it is said to be self-employment. And if there is no such risk, then it is said to be employment. Regular remuneration. अगर एक इंडिविजुअल इंटाइटल है कि उसे रेगुलर बेस पे रेमुनरेशन दिया जाए, उसे एम्प्लॉयमेंट लॉ के तहत हॉलीडेज अलाउ की जाएँ, दैन इट इज़ सेड टू बी एम्प्लॉयमेंट. कंट्रोल. हाउ टू डू वर्क. कैसे काम किया जाना है. इफ़ वन डिसाइड बाय हिमसेल्फ हाउ टू डू वर्क, इन व्हाट आवर्स दे हैव टू डू वर्क, दैन इट इज़ सेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. And if this has been decided by another party that you have to work from 9 to 5, then it is said to be employment. Obligation of work means if certain work is provided to you, you cannot decline that work. अगर आपको कुछ काम ऑफर किया जाता है आप उसे ना नहीं कर सकते, then you are obliged to do that work. This is said to be a signal of employment. Hold integral position. If you are a part of a business, integral part of a business, or hold an integral position in the business like manager, then it is said to be employment. Employment income में आपकी सैलरी, बोनसेस, कमीशन और बेनिफिट्स शामिल हैं. और इन सब अमाउंट्स में से अगर आप अलाउएबल डिडक्शन जो हम आगे अभी कंसिडर करेंगे, इफ़ वी डिडक्ट दैट अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम ऑल दीज types of income, means salary, bonus, commission, benefits, then it is said to be the employment income. Salary plus bonus plus commission plus benefits less allowable deduction. When are earning received? So it is an important question. When are earning received? So we have to consider two dates, and whichever is earlier is said to be the date when earning is received. So these dates are date of receipt and date of entitlement, when a person become entitled to receive that amount and when the person actually received that amount. Whichever date is earlier is said to be the date when earning is received. But for directors it could be earliest of date of receipt and date of entitlement, as well as date when amount is credited in company's accounting record. And this date can be if the amount is determined by the end of the year, then the end of company's period of account is the date. And if the amount is determined after the company's period of account, then date the amount is determined. So we have to consider these two dates as well for the director. But remember, important point, receipt basis does not apply to pension income. See, so these receipt basis does not apply to pension income. So a question in this regard, Josephine and Vincent are employed by Diamond PLC. Josephine is a director of a diamond company. Josephine is a director of Diamond PLC. Vincent is not a director of Diamond PLC. Diamond PLC has 31st March accounting reference date, right? Accounting year ending date. Bonuses were awarded by Diamond as follows. So first we are talking about Josephine. Josephine 5,000. This amount was determined by the directors on 28 February 23 and credited to the Josephine's director account on 10th March 23.
subject to a condition that she could not draw down the bonus until 15th April 23, on which date she became entitled to the payment of bonus. Josephine was actually paid the bonus on 28th April 23. So this is the whole information about Josephine. So we have to consider her dates. So first we need to consider that अमाउंट वॉज डिटरमाइंड ऑन 28 फरवरी 23. अमाउंट कब तय की गई है कि जोसफिन को कितनी अमाउंट बोनस की पे की जानी है, ये 28 फरवरी 23 है. एंड एज़ पर रूल अगर आपके पास अमाउंट ऑफ बोनस तय की जाती है बिफोर द ईयर एंड डेट, तो हम फिर 31 मार्च की डेट यानी ईयर एंडिंग डेट को कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट डेट जो हमने कंसिडर करनी है वो 31 मार्च 2003 है. रिमेंबर द रूल कि अगर बोनस डिटरमाइन किया जा रहा है बिफोर द ईयर एंड, देन वी हैव टू कंसिडर द ईयर एंडिंग डेट एंड दैट इज 31 मार्च 2003. देन द अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन 10th March, subject to a condition that she could not withdraw the bonus until 15th April. So 15th April is said to be a date when she becomes entitled to receive that amount. And the fourth date is Josephine was actually paid. Actually receipt of bonus date is 28th April 23. So in accordance with rules of our director, the receipt date we have to determine, and for this we have to consider whether the remuneration of bonus has been determined before the year end or after the year end. If it is determined before the year end, then we have to take the 31st March as first date to be considered. Then 10th March is a date when amount is credited to in her account, and then the date when she become entitled, because she could not withdraw that amount before 15th April. So 15th April is a date when she is entitled to receive that amount. And actually she was paid the bonus on 28th April. So out of these 4 dates, the earliest date is said to be 10th March 23. So it is the date when the bonus is to be recorded. And as this date relate to the previous year, it relates to the tax year 22-23. So that bonus would be recorded in the tax year 22-23 for Josephine. Now about Vincent. Vincent received a bonus of 3,000. Vincent become entitled to be paid this bonus on 31st March, but agreed that payment should be delayed due to Diamond's cash flow problem. He was actually paid the bonus on 30th April. So in case of a simple employee, it is quite simple that you have to consider only 2 dates when the amount is paid to Vincent, means 31st March 22, and when he become entitled to receive that amount, that is 31st March 22, and when the actual amount is paid, which is the date of 30th April 22. So whatever date is earlier is said to be 31st March. So this is recorded, the Vincent bonus would be recorded on 31st March 2022. So next is about allowable deduction, means वो amount जो आपके पास आपकी income को reduce कर देती हैं. These are said to be contribution by individual to occupational pension scheme. We'll discuss later. There are 2 types of pension scheme. One is said to be personal pension scheme and second is said to be occupational pension scheme. There are some difference in their features, so we will discuss later. But remember that if an individual has contributed some amount to the occupational pension scheme, this is said to be allowable deduction. Fee and subscription to professional body. If any fee or subscription is paid to a professional body like chartered body, it is also allowable deduction. Traveling expenses incurred in performance of duties, donation to charity but under payroll deduction scheme. Payroll deduction scheme is a scheme where you as employee allow your employer to pay a certain amount to a certain charity, कि आप अपनी पे में से कुछ अमाउंट किसी चैरिटी को देने के लिए अलाउ कर देते हैं, then it is said to be the payroll deduction scheme. So if you have decided to donate charity under payroll deduction scheme, this is also said to be your allowable deduction. Capital allowances, which we will have to discuss later on in detail, a very important topic. In easy words you can say the tax rules of depreciation. Capital allowances on plant and machinery provided by an employee. But remember that if the employee has provided that assets, then in that case
then in that case capital allowance is said to be the deduction, allowable deduction. Traveling expenses between home to permanent workplace are not deductible. Traveling expenses, if incurred for traveling between home to the workplace, permanent workplace, these are not deductible. What is mean by permanent workplace? A workplace is a permanent if an employee spend at least 40% of working time at the workplace. अगर आप वहाँ पे एटलीस्ट अपने टोटल टाइम का 40% स्पेंड करते हैं एंड द पीरियड एक्सीड 24 मंथ्स, और वो पीरियड आपका 24 मंथ से ज़्यादा, यानी 24 मंथ से ज़्यादा आप अगर लगातार किसी एक जगह पे काम कर रहे हैं तो दिस कैन बी योर परमानेंट वर्क प्लेस. एंड इफ़ यू आर डूइंग 40% ऑफ योर टाइम और स्पेंडिंग 40% ऑफ योर वर्क टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, देन इट इज सेड टू बी योर परमानेंट वर्क प्लेस. इस सिलसिले में ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिटवीन होम टू परमानेंट वर्क प्लेस हैं, इन्हें ऑर्डिनरी कम्यूटिंग कहा जाता है. तो ऑर्डिनरी कम्यूटिंग के हवाले से कोई भी एक्सपेंसेस आपके पास डिडक्टेबल नहीं है. रूल्स वी नीड टू कंसिडर अबाउट द वर्क प्लेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट वर्क प्लेस, वो ये कि इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग फॉर टू एम्प्लॉयर एंड फॉर दैट पर्पस ही इज़ ट्रैवलिंग बिटवीन द ऑफिसेज ऑफ टू एम्प्लॉयर, then this traveling expenses are not allowed as tax relief, allowable deduction. कि आप दो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं और ये दो एम्प्लॉयर दो डिफरेंट जगह पे इनके ऑफिस हैं, तो उनके ऑफिस के हवाले से आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो आपके लिए अलाउेबल नहीं है. बट इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर एट टू डिफरेंट प्लेसेस, इन दैट केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन टू ऑफिस, तब वो आपके लिए टैक्स रिलीफ के तौर पे अलाउ है. सेकंड पॉइंट ये कि इफ़ नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि फ्रॉम होम टू द परमानेंट वर्क प्लेस जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए वो ऑर्डिनरी कम्यूटिंग कहलाता है और वो रिलीफ के लिए अलाउ नहीं है. लेकिन अगर काम के लिए फ्रॉम होम टू द टेम्परेरी वर्क प्लेस अगर जाया जाए, ट्रैवलिंग की जाए, तो देन इट इज़ अलाउेबल एक्सपेंस, अलाउेबल डिडक्शन. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय टेम्परेरी वर्क प्लेस कि जहाँ पे आप 24 मंथ्स या उससे कम काम कर रहे हैं, then it is said to be the temporary workplace. Now it is possible this is said to be my home, this is my permanent workplace and this is my temporary workplace. ठीक है. So if I am traveling from there to there, so it is said to be the distance which is considered as allowable for tax relief. कि इस डिस्टेंस पे जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउेबल हैं टैक्स रिलीफ के लिए. बट बाय चांस ऐसा है कि मैं यहाँ पे परमानेंट वर्क प्लेस से होकर यहाँ पे जाता हूँ और मेरे परमानेंट वर्क प्लेस पे रुकने की रीज़न ये है कि मैंने वहाँ से कोई इन्वाइसेस लेनी थी, कोई और डॉक्यूमेंट्स लेने थे. फॉर दिस पर्पज़ आई एम जस्ट स्टॉपिंग फॉर अ वाइल देयर एंड देन गोइंग टू द टेम्परेरी वर्क प्लेस, देन स्टिल रिलीफ इज़ अवेलेबल. नाउ इट इज़ अबाउट स्टैट्यूटरी माइलेज अलाउंस. माइलेज अलाउंस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इफ़ द एम्प्लॉई इज यूज्ड हिज ओन व्हीकल, यानी एम्प्लॉई अपना व्हीकल यूज़ कर रहा है बिजनेस पर्पज़ के लिए. फॉर दैट पर्पज़ इफ़ ही इज़ यूजिंग हिज ओन व्हीकल देन ही इज़ अलाउड अ माइलेज अलाउंस. माइलेज अलाउंस वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट फर्स्ट 10,000 माइल्स इट इज़ 45 pennies एंड अवर 10,000 माइल इट इज़ 25 pennies. अमाउंट अप टू अप्रूव माइलेज अलाउंस इज़ एग्जाम्ड. जितनी भी अमाउंट आपके पास आप अगर रिसीव कर रहे हैं अप्रूव माइलेज अलाउंस के हवाले से वो एग्जाम्प्ट है. लाइक यू आर ट्रैवलिंग 10,000 माइल्स, राइट, एंड योर एम्प्लॉयर, बिकॉज यू आर यूजिंग योर ओन व्हीकल, योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू 4,500 फॉर 10,000 माइल्स ट्रैवलिंग. सो दिस 4,500 इज इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव माइलेज अलाउंस. मीन्स कि अगर आप अप्रूव माइलेज अलाउंस के हवाले से कैलकुलेशन करके देखें तो 10,000 माइल्स की अमाउंट 4,500 ही बनती है. सो इफ़ यू आर एग्जैक्टली रिसीविंग द सेम अमाउंट in accordance with the approved mileage allowance, this amount is exempt. And if you are receiving excess, it is taxable, and if you are receiving less, it is allowable deduction. Means, if you have traveled 10,000 miles, you are entitled to receive 4,500 as per approved mileage allowance, right? And now if your employer is giving you 4,500, then this is exempt. But in case, if your employer is giving you 5,000, then you are receiving 500 more than approved mileage allowance. This 500 is said to be taxable. And if you are receiving 4,000 from your employer, it means you are entitled to receive 4,500 while you are receiving 4,000. So less 500 you are receiving is your allowable deduction.
Now a question, Fred owns a car and travel 11,000 business mile in the car in the tax year. He is paid 35 pennies per mile by his employer. Required, what is the impact on Fred's assessable employment income for the tax year? So if he is traveling 11,000 mile, he is entitled to receive 10,000 into 45 pennies is 4,500, and for 1,000 extra mile he has to receive 25 pennies, and this becomes 250. So overall he is entitled to receive 4,750. He is entitled to receive 4,750 as per approved mileage allowance, but his employer is giving him 35 pennies, means employer is giving him 35 pennies per mile. So in fact, what amount his employer is giving to him, this is 3850. So he is receiving 3850, less than he deserved. He is entitled to receive 4,750 as per approved mileage allowance, बट उसका एम्प्लॉयर उसको सिर्फ 3850 दे रहा है. सो जो 900 वो कम रिसीव कर रहा है, दैट इज़ अलाउएबल डिडक्शन फॉर हिम. So for this you have to do illustration 2, which is on PDF page number 181, and test your understanding 1, which is on PDF page number 182. For taxable benefit, general rule is cost of providing benefit is taxable. What does mean this? By that mean कि अगर कोई benefit एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जा रहा है और उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर की कॉस्ट भी खर्च होती है, तो वट एवर कॉस्ट इज़ incurred by employer for providing such benefit is considered as the benefit for employee, right? So important rule है कि आपको ये नहीं कंसिडर करना कि एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिल रहा है, आपको ये कंसिडर करना है कि उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर की कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है. तो जो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट खर्च हो रही है उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए, वही एम्प्लॉय का बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा. टाइम अपोर्शन, सेकेंड बात आपको टाइम अपोर्शन करना है. इफ़ एनी बेनिफिट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ अरसे के लिए प्रोवाइड किया जाता है, साल के कुछ अरसे के लिए, तो फिर आपको उसे टाइम अपोर्शन भी करना है. लाइक अ सर्टन बेनिफिट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द 8 month पीरियड, देन यू हैव टू अपोर्शन दैट फॉर द 8 month पीरियड. एंड इफ देयर इज़ एनी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, अगर वो बेनिफिट हासिल करने के लिए एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो सच कंट्रीब्यूशन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सच बेनिफिट. यानी कोई बेनिफिट एम्प्लॉय हासिल कर रहा है, उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए एम्प्लॉय की पे में से भी कुछ अमाउंट डिडक्ट की जा रही है, या एम्प्लॉय कुछ पेमेंट कर रहा है, तो वट एवर पेमेंट इज मेड बाय द एम्प्लॉय इज विल रिड्यूस द बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय. बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ अबाउट प्राइवेट पेट्रोल, प्राइवेट फ्यूल, जिसकी एक्सेप्शन को हमने लेटर ऑन कंसिडर करना है. तो सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं अकोमोडेशन की. अकोमोडेशन में आपके पास जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन भी है और जॉब नॉट रिलेटेड अकोमोडेशन भी. जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन जो है प्रोवाइड की जाती है फॉर सिक्योरिटी रीज़न, लाइक प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस दिया जाता है सिक्योरिटी रीज़न के लिए, तो दिस इज सेड टू बी जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन. नेसेसरी फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, ये आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ के लिए नेसेसरी है या कस्टमरी है कि बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ इससे होती है, तो इन रीजंस की वजह से जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है. नाउ इन दिस केस एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद लिविंग अकोमोडेशन, अगर आपके पास कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहा है एम्प्लॉयर फॉर द लिविंग अकोमोडेशन, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट विल बी 10% ऑफ नेट अर्निंग एम्प्लॉयमेंट इनकम दैट इज सेड टू बी टैक्सेबल. मीन्स वट एवर बेनिफिट इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी बेनिफिट आपके वो बिल पे कर रहा है, आपको उसने फर्नीचर दिया है, कुछ भी ऐसे बेनिफिट उसने प्रोवाइड किए हैं, उन सब बेनिफिट के लिए सिर्फ आपको ये कंसिडर करना है कि 10% ऑफ नेट अर्निंग जो है वो टैक्सेबल होगी जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन में. एंड इफ द अकोमोडेशन इज़ नॉट जॉब रिलेटेड, देन यू हैव टू कंसिडर द बेसिक चार्ज. बेसिक चार्ज इज सेड टू बी हायर ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू एंड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर. तो आपके पास एनुअल रेंटल वैल्यू को देखेंगे और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर को, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है दैट इज कंसिडर्ड टू बी बेसिक चार्ज. रिमेंबर दैट यू हैव बीन गिवन सम टाइम ओनली वन थिंग, सो वही आपके लिए फिर बेसिक चार्ज ट्रीट किया जाएगा. एडिशनल चार्ज उस वक्त कंसिडर किया जाता है कि अगर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन ग्रेटर देन 75,000 हो.
So amount chargeable would be whatever the cost of the building is. Like if it is 90,000, so we will consider the difference of 90,000 and 75,000 and multiply by this 2%, which is the current year percentage. तो एडिशनल चार्ज के लिए आपने ये कंसिडर करना है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट 75,000 से कितनी ज़्यादा है. जितनी भी एक्सेस अमाउंट है 75,000 से, उसका 2% एडिशनल चार्ज के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा. लेकिन व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस एनी इम्प्रूवमेंट टू द प्रॉपर्टी मेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर फॉर विच द बेनिफिट इज बीइंग कैलकुलेटेड. यानी आपके पास टैक्स ईयर से पहले, आपने उस टैक्स ईयर के स्टार्ट होने से पहले आपने जो भी इम्प्रूवमेंट की है वो कंसिडर की जाएगी कॉस्ट. कि आप अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर रेंटल ऑन अप्रैल, और वट एवर एक्सपेंसेस यू हैव इनकर्ड बिफोर अप्रैल, वो आपके पास इम्प्रूवमेंट के तौर पे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. इफ़ एनी एक्सपेंसेस डन फॉर इम्प्रूवमेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, जून, जुलाई, देन इट विल नॉट बी कंसिडर फॉर सच टैक्स ईयर. यानी 22-23 में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो 22-23 की इनकम के लिए इम्प्रूवमेंट के तौर पे कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. If the property is made available to employee more than 6 years after the employer has purchased it, use market value instead of cost. यानी एम्प्लॉयर ने 2013 में परचेज़ की थी बिल्डिंग और एम्प्लॉय को 2020 में उसने रेंट पे दी, उसे अकोमोडेशन के तौर पे प्रोवाइड की. इन दैट केस, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज विच इज़ 2013 to the date when it is provided for accommodation to employee, which is 2020, there is a gap of more than 6 years. If this gap is for more than 6 years, then in that case you don't have to consider the cost, you will consider the market value. Any contribution made by employee can be deducted in arriving at the taxable benefit, and in this regard, if to obtain such benefit, if employee has paid something, such amount which has been paid by the employee will reduce the value of benefit. उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए एम्प्लॉई ने जो भी पेमेंट की है वो उस बेनिफिट को रिड्यूस कर देगी. Accommodation, living expenses, expenses connected with living accommodation are taxable on the employee if they are paid by employer. यानी आपके बिजली गैस के बिल अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये टैक्सेबल बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा इन केस ऑफ जॉब नॉट रिलेटेड अकोमोडेशन में. Question in this regard is Quinton was provided with a company flat in January 2022. The rateable value of flat is 1200, right? The property cost his employer 1,25,000 but was valued at 1,50,000 in January 2022. तो एम्प्लॉयर ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 1,25,000 की, लेकिन जनवरी 22 में इसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई है. क्विंटन पेड रेंट ऑफ 500 इन ईच टैक्स ईयर. तो यहाँ पे क्विंटन जो है, जो एम्प्लॉई है, वो इस बेनिफिट को हासिल करने के लिए 500 की पेमेंट भी कर रहा है. सो रिक्वायरमेंट इज व्हाट इज़ द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर 22-23 अज्यूमिंग हिज एम्प्लॉयर परचेज द प्रॉपर्टी इन 2020. अगर उसके एम्प्लॉयर ने 2020 में ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है, अगर 2020 में परचेज़ की है एंड इट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन जनवरी 2022, तो इसका मतलब है 6 ईयर्स का पीरियड नहीं हुआ. नाउ वी नीड टू कंसिडर द कॉस्ट. हमें कॉस्ट कंसिडर करनी है. Like we have to consider the difference of 1,25,000 for additional charge. We have to consider a difference of 1,25,000 and 75,000 and इसका 2% आपके पास additional charge आ जाएगा. बेसिक चार्ज तो आपके पास रेटेबल वैल्यू ऑफ फ्लैट है वो 1200 ही रहेगा, लेकिन एडिशनल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए वेदर वी हैव टू यूज़ द कॉस्ट और टू यूज़ द मार्केट वैल्यू, ये डिसाइड करना. रूल इसके लिए है कि अगर एम्प्लॉयर ने वो बिल्डिंग परचेज़ करने के 6 साल से ज़्यादा अरसा गुजारने के बाद उसे अकोमोडेशन के तौर पर प्रोवाइड किया, तो फिर हम मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं. यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. बिल्डिंग परचेज़ की गई है 2020 में और प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को 2022 में, तो ये विद इन 2 ईयर प्रोवाइड की जा रही है. सो वी नीड टू कंसिडर कॉस्ट. बट इन द सेकेंड पार्ट बी, हिज एम्प्लॉयर परचेज द प्रॉपर्टी इन 2014. अगर एम्प्लॉयर ने ये प्रॉपर्टी 2014 में परचेज़ की है और वो 22 में लेट आउट कर रहा है, तो इट मीन्स परचेज़ करने के बाद और अकोमोडेशन के तौर पे प्रोवाइड करने के दरमियान 8 ईयर्स का गैप मौजूद है. सो इट इज़ मोर देन 6 ईयर्स. सो वी नीड टू कंसिडर हेयर द मार्केट वैल्यू 1,50,000 फॉर द एडिशनल चार्ज.
बेसिक चार्ज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एडिशनल चार्ज के लिए आप ये कैलकुलेशन करेंगे, राइट। And then Quinton was required to live in flat as he was employed as the caretaker of the company premises of which flat was apart. So अगर हम इस थर्ड पॉइंट को कंसिडर करें तो यहाँ पे ड्यूटीज़ जो अमाउंट शामिल की जानी चाहिए एज टैक्सेबल बेनिफिट दैट इज़ नल, बिकॉज यहाँ पे अकोमोडेशन हो जाती है जॉब रिलेटेड, और जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन में 10% ऑफ एम्प्लॉई इनकम विल बी कंसिडर एज हिज बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉई. So here we have not been given any amount as employment income, so we could not record any amount to be taxable for the employee. So again अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें, पहली बात है कि आपके लिए बेसिक चार्ज हमेशा 1200 रहेगा. अगर हम फर्स्ट केस की टोटल बात करें, बेसिक चार्ज आपके पास 1200 है, एडिशनल चार्ज 1,25,000 और 75,000 का डिफरेंस यानी 50,000 का 2% और 50,000 का 2% आ जाता है आपके पास 1,000. तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा 1200 प्लस 1,000 2200. बट इस 2200 में से वट एवर अमाउंट इज पेड बाय द क्विंटन टू एक्वायर सच बेनिफिट, कितनी अमाउंट 500 उसने पे की है इस बेनिफिट को हासिल करने के लिए, तो वो लेस कर देंगे, 1700 बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा इन द फर्स्ट केस. इन द सेकंड केस आपके पास बेसिक चार्ज वही रहेगा 1200, लेकिन 1,50,000 और 75,000 का डिफरेंस आपके पास आ जाता है 75,000. एंड 75,000 का 2% क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1,500. सो बेसिक चार्ज 1200 प्लस एडिशनल चार्ज 1,500, टोटल 2,700 आ गया. इसमें से 500 जो अमाउंट क्विंटन पे कर रहा है वो लेस कर देंगे और टैक्सेबल बेनिफिट इन टोटल आ जाएगा 2,200. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Ellen is provided with accommodation by her employer, which the employer purchased 35 years ago at a cost of 72,000. The property has an annual value of 2,600 and had a market value of 2,45,000 when first made available to Ellington 8 years ago. So as वो 8 years ago provide की गई है, 35 साल पहले ख़रीदी गई थी. So it means कि date of purchase से accommodation provide करने के दरमियान जो period है उसमें more than 6 year का gap है. 35 ईयर्स पहले परचेज़ की गई थी, 8 साल पहले अकोमोडेशन में दी गई. इसका मतलब है परचेज़ करने से लेकर अकोमोडेशन के तौर पे प्रोवाइड करने के दौरान 27 ईयर्स का गैप मौजूद है. सो वी हैव टू कंसिडर द मार्केट वैल्यू ऑफ 2,45,000. इस रूल से तो यही समझ आती है, लेकिन आगे देखते हैं. एलन पेज 250 पर मंथ टू हर एम्प्लॉयर टू लिव इन द प्रॉपर्टी. द अकोमोडेशन डज नॉट क्वालिफाई एज जॉब रिलेटेड, वट इज़ द असेसेबल बेनिफिट. सो वी नीड टू कंसिडर वट इज़ द असेसेबल बेनिफिट. तो पहली बात करते हैं बेसिक चार्ज की. तो बेसिक चार्ज में क्या कंसिडर करेंगे कि उसकी जो वैल्यू है एनुअल वैल्यू दैट इज़ 2,600. बट व्हाट एम्प्लॉय इज़ पेइंग फॉर दैट, एम्प्लॉय इज़ पेइंग 250 पर मंथ. अगर 250 पर मंथ पे किया जाए तो इस साल में उसने कितनी अमाउंट पे की होगी, 250 मल्टीप्लाई 12, ही हैज़ पेड 3,000. एक अकोमोडेशन जिसकी वैल्यू 2,600 है उसके लिए अगर 3,000 एम्प्लॉय पे कर रहा है तो एम्प्लॉय का तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, राइट. एंड सेकंड रूल जो आपने याद रखना है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस दैट द अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय आफ्टर द परचेज ऑफ मोर देन 6 ईयर, हम फिर भी कोई बेनिफिट कंसिडर नहीं करेंगे. रीज़न इसकी क्या है, रीज़न है कि ओरिजिनल कॉस्ट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की 75,000 से लेस है. इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग is less than 75,000, then we won't consider any benefit for the employee. So this is an important point.